Hey skincare lovers, welcome to my channel Skintellect by Snehita. I am Dr. Snehita, PhD in Medical Biochemistry. So welcome to today's episode of Skincare Ingredient Simplified. So here we are decoding a most popular skincare ingredient. But today's star ingredient is niacinamide. It's a most versatile and trusted ingredient. So let's understand why it deserves a place in your routine. You have probably seen it everywhere, but what it actually do? भी जानते हैं कि niacinamide क्या होता है. What is niacinamide? Niacinamide is vitamin B complex. It is a water soluble vitamin. वो आपके लीवर में स्टोर नहीं होता है. It is daily excreted by your body because it is in water soluble form. Niacinamide is more gentle and powerful active. So top 5 benefit of the niacinamide is first, होता है आपके pores by improving your skin texture by regulating your oil. Second, it fights the acne क्योंकि इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है एंड ऑल्सो इट कंट्रोल द ऑयल. एंड थर्ड, इट हाइड्रेट्स द स्किन. सो इट सपोर्ट करता है सीरामाइड्स को एंड वो हेल्प करता है टू लॉक इन द मॉइस्चर इन योर स्किन. फोर्थ इज टू फेड्स द डार्क स्पॉट. इट इनिबिट योर मेलानिन ट्रांसफर. लास्ट फिफ्थ वन इज टू बूस्ट द फर्मनेस because it has the collagen and also increase the elasticity. So that's why it is multifunctional and lots for one molecule. So now the biochemistry insight. जब आप niacinamide यूज करते हैं अपने स्किन में, so that converts from NAD to NADP. So these two molecules, this work as a energy coins. So ये NAD क्या काम करते हैं आपकी स्किन में? फर्स्ट, ये आपके स्किन बेयर रिपेयर करते हैं. सेकंड, इट कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन. एंड थर्ड, स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं. सो दैट्स व्हाई niacinamide इज सो वर्सेटाइल. करता है आपके एक्ने में, डलनेस में, इन्फ्लेमेशन में. तो इट हेल्प्स इन ऑल ऑफ देम. So how to use the niacinamide effectively? फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो 5% niacinamide से यूज करिए. इफ यू आर यूजिंग द मोर कॉन्सेंट्रेशन लाइक 10%, सो इफ यू हैव द एक्ने प्रोन स्किन और योर सेंसिटिव स्किन, तो इट कैन इरिटेट योर स्किन एंड ऑल्सो कॉजेज द रेडनेस. और niacinamide को लेयर अप कैसे करना है? सो इट इज अ बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन. तो फर्स्ट यू कैन क्लीन योर फेस बाय एनी क्लींजर whatever suits your skin and apply the toner. Toner is basically optional and you can directly go with serum. If you are using an AM, so after the serum you can apply the moisturizer then your sunscreen. So you can use in a both time of a day, AM PM दोनों में use कर सकते हैं. If you are applying in AM, so don't forget to apply the sunscreen. And आप niacinamide किसके साथ pair up कर सकते हो? First is the hyaluronic acid, second is salicylic acid, third is the vitamin C अगर उसका gentle formulation है तो. Otherwise you have to use in different AM and PM routine. एंड किसके साथ आप अवॉइड कर सकते हैं niacinamide? फर्स्ट इज द रेटिनॉइड. इफ यू आर बिगनर, प्लीज अवॉइड यूजिंग बोथ ऑफ देम इन द सेम रूटीन. एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू डू स्किन पैच टेस्ट बैक ऑफ द ईयर एंड आपके जॉ लाइन के पास इफ यू आर बिगनर. niacinamide serum is not for everyone. Niacinamide has so much benefit and works wonder for many skin type, but it doesn't suited my. So based on my own experience, मेरी acne prone skin है. एंड फर्स्ट टाइम मैंने niacinamide यूज किया था ऑफ द 10%, सो इट इरिटेटेड माई स्किन और बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो गए थे मेरे स्किन में. सो इफ यू आर बिगनर फ्रेंडली और इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, सो प्लीज गो फॉर 2 to 5% niacinamide एंड अवॉइड यूजिंग वेरी हाई परसेंटेज. या आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ ब्लेंडेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं. डोंट गो विद अ स्किन केयर हाइप कि मोर कॉन्सेंट्रेशन से आपका ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे आपकी स्किन में. इट डजंट हैपन ऑलवेज. स्किन केयर इज पर्सनल. इफ योर स्किन लव्स द niacinamide एंड इफ यू वांटेड टू गिव अ ट्राई, प्लीज गिव अ ट्राई because every skin is unique. So while less is more, and what is the 5% rule? 5% niacinamide shows the maximum absorption and more benefit. If you are using 10%, अगर आप 10% concentration में जाते हैं, so it can irritate your skin and also causes the redness, irritation and dryness. Concentration का overuse करने से it can lead to the disrupt your pH and also damage your skin barrier. So stick to the 5% of niacinamide for best balance of science and skin safety. So which skin types loves the niacinamide? For acne prone skin, it helps in a breakdown and also reduces the sebum. In a dry skin, it locks in the moisture in your skin. For pigmented skin, it helps in reducing the pigmentation and fades the dark spot. It is aging skin, it supports with the collagen. It is sensitive skin, it helps in the irritation and also strengthens your skin barrier. So no matter what's your skin type, the ingredient adjust and support your skin needs. Let's explore some niacinamide serum. So here's the product suggestion forum.
beginner and the advanced one. अगर आप beginner हैं so start with the 2 to 5%. You can use Minimalist 5% niacinamide, Ordinary का 5% niacinamide, and also you can use the Deconstruct 5% niacinamide. The advanced one, you can go for Dermaco 10% niacinamide, the Ordinary 10% niacinamide, also the Dotandkey 10% niacinamide, and the Plum 10% niacinamide. Talk about this some niacinamide serum that you have seen. So most of them are 10% niacinamide serum. So which is most popular and loved by so many? Personal opinion is my skin is reacted to the 10% concentration of a niacinamide. So that's why I'm saying that you can start with 5%. अगर आप beginner friendly use करना चाहते हैं तो you can go with a Deconstruct 5% niacinamide, or there is also other brand 5% niacinamide. You can use any of them. So here I will attach more niacinamide serum. So choose wisely based on your skin type. If this helped you to understand the niacinamide better, and give a like and share to someone who is new to skincare. So for more skincare ingredient breakdown backed by the science, you can subscribe my channel Skintellect by Snehita. So drop the comment and let me know if niacinamide serum has worked for your skin. And see you in the next episode. Until then, bye bye, take care, please follow for more.